हाय। इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे यूनिट नंबर 5, दैट इज स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच। तो इस यूनिट के अंदर हम सबसे पहले स्ट्रक्चर और फंक्शन इन दोनों का मीनिंग समझेंगे। उसके बाद स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच के जो फीचर्स है वो किस तरह से यूज होते फॉर स्टडिंग द कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये मेनली डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर। सो द यूनिट विल डिस्कस द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल ऑफ अ सिस्टम एंड देयर इंडिपेंडेंस एंड इन्फ्लुएंस। ओके, तो ये हम चीज़ें डिस्कस करेंगे इस यूनिट के अंदर। द स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच लाइक द जनरल सिस्टम अप्रोच इन अ ग्रैंड थेरी। ओके, सो ग्रैंड थेरी के अंदर जो जनरल सिस्टम अप्रोच है इज जस्ट लाइक द स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच। सो अमंग स्कॉलर हु हैव यूज एंड कंट्रीब्यूटेड, ओके, contributed to the its development. They are the sociologists and some of the junior and political scientists. So they are the Talcott person Robert Merton and Maricon Levy, and junior and political scientists such as Gabriel Almond, okay, David Epted. Okay, in comparative public administration, Frederick has been a chief proponent of this approach. We have to understand the meaning and implications of the twin terms, that is structure and function, in the context of the structural functional approach. So this term have a distinct meaning, एक अलग meaning है in this the approach than what are used in the traditional social system. So in this approach a social structure is considered any pattern of behavior, okay, which has become the standard features of social system. तो ऐसा कोई भी बिहेवियर पैटर्न जो एक स्टैंडर्ड फीचर बन जाए किसका, सोशल सिस्टम का। ओके, कोई भी ऐसे बिहेवियर पैटर्न जो एक स्टैंडर्ड फीचर्स बन जाए सोशल सिस्टम का, उसको क्या बोलेंगे, हम स्ट्रक्चर बोलेंगे। ओके, in the sense of structural features approach. Okay, so structure may be of two type, तो दो टाइप के स्ट्रक्चर होंगे, that is concrete and second one is the analytic. So concrete mean was, okay, such a government department जैसे कि corporations, bureau and any, okay, they may be, okay. Then analytics, the concept abstracted from concrete reality such as structure of authority or power or control, अकाउंटेबिलिटी, ये क्या हो जाता है, एनालिटिक स्ट्रक्चर हो जाता है, जिसके अंदर मेनली अथॉरिटी, पावर, कंट्रोल और अकाउंटेबिलिटी होता है। एंड कॉन्क्रीट, दैट इज डिपार्टमेंट, कॉर्पोरेशंस एंड ब्यूरो। ओके, सो जनरली एनालिटिक स्ट्रक्चर हैव some concrete reference, okay, concrete referent or base. Thus the term structure in the structural functional approach goes beyond formal structure and carry an additional connotations. So generally traditional administrative analysis function is a synonymous of the task. Okay, function is just like a task, like the function of the chief executive or president or prime minister or chief minister, or you can say chief secretary. However, in all structural functional analysis function has two meaning. So first one is the, it is a pattern of interdependence or relationship between two or more, okay, two or more structure. So and second is the, it refer to the consequences of, okay, of the structure on the other structure or as a whole system. So these are the two meaning of the function. The first one is the, it is a pattern of interdependence or relationship between two or more structure, and second is, it is the consequence of the structure on the other structure. So essentially interdependence or influence or similar in nature. Okay, so interdependence and influence are similar in nature because if two are interdependent, they, it means they are influencing each other. So they denote reciprocity, okay, of the relationship between among various structure or substructure or between structure and total system. For instance, we examine the administrative analysis, the relationship between finance management and planning, or between control and accountability, or between authority and responsibility. So both these have, they influence each other. Okay, if any person have the authority, it means they have the some responsibility. So
An analysis of such interdependence the bring out the actual dynamic of the administrative system. Further, we also study under this approach the influence of the structure on large administrative system and the impact of the total administrative system on the particular structure. For instance, we would study in this approach the effect of personal policies on the overall performance of an administrative system, likewise influence of important policies and decisions on the human resource management. ठीक है, तो ये सभी चीज़ें हम इस स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच के थ्रू समझते हैं। ठीक है, तो जैसे कि पॉलिसी अगर अच्छी रहेगी, डिसीजन अच्छे रहेंगे, तो डेफिनेटली द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट विल बी इफेक्टिव। ओके, तो इस तरह से हम देखें किस तरह से एक स्ट्रक्चर और एक फंक्शन, ओके, बोथ विल वर्क टुगेदर and make the administrative system, okay, more dynamic. So multifunctionality, it is important to note that structure may be unifunctional और मल्टीफंक्शनल। तो स्ट्रक्चर जो होता है वो यूनिफंक्शनल भी हो सकता है या मल्टीफंक्शनल भी हो सकता है। यूनिफंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है? मे बी परफॉर्म ओनली वन फंक्शन लाइक द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, वाइल मल्टीफंक्शनल स्ट्रक्चर जैसे कि प्राइम मिनिस्टर हो गया, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के पास बहुत सारे डिपार्टमेंट जैसे पुलिस डिपार्टमेंट होता है और मे परफॉर्म सेवरल इंटर रिलेटेड और डिस्टिंग फंक्शन, अलग अलग टाइप के फंक्शन रोल प्ले करता है। सो इन डेवलप्ड कंट्रीज वेयर द लेवल ऑफ स्पेशलाइजेशन is relatively high, we might find certain unification structure, while in the developing world, okay, where the degree of specialization relatively low रहेगी, तो क्या होगा? फाइन स्ट्रक्चर एंड मल्टी फंक्शनैलिटीज। ओके, तो उसमें क्या हो जाएगा? एक काम बहुत सारे लोगों को दिया, मतलब बहुत एक काम को, ठीक है, ऐसे बहुत सारे काम को एक व्यक्ति को दिया जाएगा। ओके, जैसे मान लीजिए कोई सेक्रेटरी है, ओके, सेक्रेटरी लेवल का अधिकारी है, या जैसे मान ले कोई डीएम है तो उसको बहुत सारे काम दिए जाएंगे, या कोई भी अधिकारी हो किसी भी डिपार्टमेंट में तो उसको मल्टी फंक्शन दिए जाते हैं, और बिकॉज ऑफ द रिसोर्सेस, ओके, because of lack of resources mainly. In public administration, a unification administrative system is difficult to invise, okay, since the bureaucracy is involved directly or indirectly in a variety of function, okay. So bureaucracy हर जगह पे फंक्शन रोल प्ले करता है। सो लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी इन द डेवलपिंग कंट्रीज इन अ डेमोक्रेटिक सेटअप। सबसे फर्स्ट पॉलिटिकल, so occasionally bureaucrats align with politician in sharing influence and power. So sometimes political leader use administrator to achieve their political goal. Okay, so second is economic. An administrative system has the responsibility to regulate and promote economic system in a domain of agriculture, industry, irrigation, transport. Okay, then third one is social. Bureaucrats have the responsibility of playing an important role in designing policies in the sphere of education, health, gender justice, child welfare. Then cultural, the attitude and behavior of administrator influence the development of social attitude and values in the society and vice versa. Technological and administrative system influence the technological system by determining scope of operation, assigning its responsibilities, providing its resources, and preparing technocraft for the specific, okay, obligations. So herein the administrative system influence the political, economic, social, cultural and technological system, in turns influence the ऑल ऑफ देन। तो किस तरह से हम मेनली क्या पढ़ाई कर रहे हैं इसमें, किस तरह से कोई भी स्ट्रक्चर जो होता है वो किस तरह से फंक्शन को इन्फ्लुएंस करता है। स्ट्रक्चर मतलब कोई भी, हम बोल सकते हैं कोई कॉन्क्रीट थिंग, किसी भी पोस्ट को बोल सकते हैं हम, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए चीफ सेक्रेटरी है, ओके, देन दिस इज वन ऑफ द स्ट्रक्चर। नाउ हाउ इट्स फंक्शन, ओके, विल इन्फ्लुएंस द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। तो उसके बहुत सारे वेरियस फंक्शन होते हैं, ओके, तो वो फंक्शन जो है किस तरह से एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को इन्फ्लुएंस करता है। ओके, सो मेनली दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस, ओके, एंटायर चैप्टर। सो मल्टी स्ट्रक्चरलिटी अभी हमने देखा, ओके, यूनी, ओके, मतलब एक फंक्शन,
एक स्ट्रक्चर का एक फंक्शन। अभी हम देख रहे हैं मल्टी स्ट्रक्चरलिटी। ओके, सो वन स्ट्रक्चर मेनी फंक्शन। So in the structural functional approach, it is postulated that function may be performed one structure, okay, or by more than one structure. So so and it may be possible that one function can be performed by multi structure, okay, and that is the multi structurality. So the administrative function is performed not just by bureaucrats but by many other factors of the society. तो ये तो वाइस वर्सा हो सकता है। ओके, मतलब ये कि एक स्ट्रक्चर है तो बहुत सारे फंक्शन, ओके, फंक्शन कर सकता है। सेम वे एक फंक्शन को बहुत सारे स्ट्रक्चर, ओके, मतलब एक कोई जैसे एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ एक ब्यूरोक्रेट्स ही नहीं चलाता है। ओके, देयर आर सो मेनी प्लेयर्स, सो मेनी सोशल एज वेल एज सो मेनी पॉलिटिशियन। ओके, मीन्स एवरीवन, ओके, एवरीवन गिव देयर ओन एफर्ट टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, हर कोई अपना अपना योगदान देता है टू रन द सिस्टम। तो इसको चलाने के लिए अलग अलग स्ट्रक्चर यूज हो रहे हैं, तो दैट इज मल्टी स्ट्रक्चरलिटी। ओके, एंड वाइस वर्सा फॉर द अकॉर्डिंग टू द फंक्शन। So for instance, politicians make law and policies and determine the scope of administrative system. The economic system provides resource to the administrative system and give it the responsibility of implementing economic policies. And at the social level, tribes, caste and immovable social culture group but put pressures on the administrative system to safeguard and promote their specific interest. Okay, so इस तरह से एक एक जो फंक्शन है वो बहुत सारे स्ट्रक्चर काम, उसके लिए बहुत सारे स्ट्रक्चर लोग काम करते हैं। ओके, जैसे यहाँ एग्जांपल दिया, अलग अलग लेवल पे अलग अलग चीज़ें, ओके, अलग अलग फंक्शन। देन रिक्विजिशंस एंड प्री रिक्विज, ओके, रिक्विजाइट एंड प्री रिक्विजाइट फंक्शन। इन स्ट्रक्चरल फंक्शनल एनालिसिस इट इज postulated that there is a certain requisite, okay, requisite function in a society or organization that ensure their health and continuity. Okay, so while there are also certain prerequisite functions that are essential for the birth and survival of the social system. Okay, some of the prerequisite पहले से वो जरूरत है फॉर द बर्थ टू लेके पूरा सर्वाइवल तक। ओके, सोशल सिस्टम के। देन रिक हैज़ आइडेंटिफाई 5 फंक्शन प्री रिक्विजाइट फॉर एनी सोसाइटी। कौन से जैसे इकोनॉमिक हो गया, सोशल, कम्युनिकेशनल, सिम्बॉलिक एंड पॉलिटिकल। तो ये सभी जो फंक्शन है ये ज़रूरत होते, दिस आर द बेसिक, ओके, बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर द सोसाइटी। ओके, दिस इज प्री रिक्विजिट मेनली। So we can assume that any administrative system will have the requisite function of policy making, decision making, planning, financial management, human resource management, engagement and participation of citizen. Likewise, creation of administrative organization will need law, manpower and finance एज प्री रिक्विजाइट। ओके, तो ये किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओके, फॉर क्रिएशन ऑफ एनी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन वी विल नीड मैन पावर, लॉ, फाइनेंस। ओके, दैट आर दी प्री रिक्विजाइट, okay, prerequisites. Then application, while Gabriel Almond referred to the rule implementation function of a political system performed through the administrative system, he is conscious of the fact that bureaucracy is also involved in the rule making, though not in formal manner. Now, okay, no law can be made without input from the administration. So David Apter also underline the importance of administrative system in the modernization process. However, it is Frederick mainly who has used the structural functional approach in constructing his model of agraria, okay, and industria and fuse. Then prismatic and diffracted societies. So perhaps no other comparative administration scholar have gone beyond Rig in the application of this approach. Okay, कौन सा approach? This is social, political, okay, sorry, structural and functional approach in explaining the cross national and cross cultural administrative reality. Then merit of the approach, merit of the approach, certain merit of the structural functional approach
जैसे कि स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच टेक डायनामिक व्यू of administrative structure and function. Then it is systematic in nature, looking at interaction and interrelationship among the various structure. It's a value neutral. Okay, it emphasizes that certain structure that are found in developed administrative system may not have their counterpart in developing nation. Okay, so eight administrative function are common in both. Fifth one is it points out that the absence of structure does not mean that certain functions are not being performed. Maybe they are performed by certain other structure. So it conveys that various indigenous structure in non-Western nation may be useful in their distinct setting. Okay, distinct setting, even though they appear to be dysfunctional from the point of view of the Western nation. So the approach is ecological in character. Then we will see the limitation. These are mainly the merits. Okay, स्ट्रक्चरल जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच है उसके ये सब क्या है, मेनली मेरिट है कि इसका ये क्या देखता है, डायनामिक व्यू पॉइंट है इसका. देन ये सिस्टमैटिक इन नेचर है, वैल्यू न्यूट्रल है ये. ओके, देन इस अगर इसमें अगर मेनली क्या है, इसमें जो भी चीज़ें इसके थ्रू जो फंक्शन किए जाते हैं वो क्या है, फंक्शन वो कॉमन फंक्शन होते हैं. एंड इट इज़ परफॉर्म. ओके, it is mainly the structure base. Okay, structure and functional base. So these are some of the, okay, some of the function, okay, some of the merit and function of the structural functional approach. Now limitation, what are the limitation, drawback क्या क्या है इस structural functional approach के for studying the comparative public administration. So it is too grand, okay, as approach to offer operational definition and researchable concept. Okay, then it is difficult to identify all functional performed by structure. Likewise, it is almost impossible to identify various structure परफॉर्मिंग पर्टिकुलर फंक्शन. ओके, क्योंकि हमें पता नहीं रहता है कौन सा स्ट्रक्चर कौन सा फंक्शन परफॉर्म करेगा. ओके, एंड हाउ मच फंक्शन दे विल परफॉर्म. सो इट प्रीमाइस are too general, making it difficult to compare administrative system across various nation and culture. हो सकता है एक देश के अंदर कोई पोर्टफोलियो है, उसको कोई और एक फंक्शन दिया हो, सेम टाइप का भी अगर पोर्टफोलियो है तो हो सकता है उसको अलग अलग टाइप के भी फंक्शन दे रखा हो. तो लाइकवाइज it is very difficult to compare the both the portfolio of the different nation. Okay, so despite the above limitation, the structural functional approach offer a new vision. Okay, new vision to look at the diversity in the nature, scope, performance and impact of administrative system in a comparative context. So this is all about the structural functional approach. So at last conclusion, this unit has deal with the structural functional approach with its multifunctionality in terms of political, economic, social, cultural and technological premise. Okay, so multi-structurality, requisite or prerequisite, function, application and merit and limitation. So all this we cover in this chapter. Okay, so that's all for this video. Thank you. Bye bye.